Since cause of death in the present case was clearly established as a snake bite, investigation is absolutely one-sided. Just jog my memory, क्या है केस? ये लॉर्ड साहब ये है कि इन्होंने कहा कि सांप के काटने से वो मरी। हाँ। तो उसमें क्या है कि 5 महीने की 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने डॉक्टर को मैनेज किया और उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसमें पीएम रिपोर्ट में नहीं आ पाई। जो ऑनरेबल कोर्ट ने डीपली उसको देखा था पीएम रिपोर्ट, और उसके बाद जब विसरा रिपोर्ट के लिए गया तो उन्होंने कहा कि साहब आपने जो सांप ने काटा है वो पार्ट काट के हमारे पास नहीं भेजा। अगर आपको अरेस्ट से डर है तो उसके लिए 430 है। ऐसा है मिस्टर काउंसिल, look, it's like this. Under 482 the arms of the High Court are limitless. इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था? ससुराल घर के अंदर। बॉडी कहाँ पर थी? जी सर, बॉडी कहाँ पर थी? घर के अंदर पड़ी थी। घर के अंदर पड़ी थी। उस पे कहाँ पर दिख रहा है बाइट मार्क्स? रिपोर्ट दे रखा है, बिल्कुल कहते हैं ना कि सूक्ष्म फाइंडिंग। ये लॉर्ड साहब 9/2/2022 की ऑर्डर शीट देख लें लॉर्ड साहब। यस, एफएसएल रिपोर्ट। आपने मेरे को एक पार्टी नहीं बनाया। आप कौन है इसमें? मैं इसमें मेरे अगेंस्ट में ही आप रिलीफ मांग रहे हैं। नहीं, आप इंटरवेंशन की एप्लीकेशन यू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इंटरवेंशन। एक मिनट, जस्ट जॉग माय मेमोरी, क्या है केस? ये लॉर्ड साहब ये है कि इन्होंने कहा कि सांप के काटने से वो मरी। हाँ। तो उसमें क्या है कि 5 महीने की 2.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने डॉक्टर को मैनेज किया और उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट उसमें पीएम रिपोर्ट में नहीं आ पाई। जो ऑनरेबल कोर्ट ने डीपली उसको देखा था पीएम रिपोर्ट, और उसके बाद जब विसरा रिपोर्ट के लिए गया तो उन्होंने कहा कि साहब आपने जो सांप ने काटा है वो पार्ट काट के हमारे पास नहीं भेजा। तो और दूसरा मेरा निवेदन है, इनकी जो इंटरवेंशन की है ये एक्यूट अभी लाइट में ही नहीं है। ये तो फिर अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। एफआईआर एक मिनट एफआईआर दर्ज हो गया। एफआईआर 498 एक ही दर्ज हुई है। अपना कहना है कि 302 और 304 भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। विद इन 4 मंथ में खत्म होगी शादी के बाद। तो अभी तो इनको सुनने जाने का कोई अधिकार ही नहीं है। कोई ट्रायल थोड़ी है ट्रायल कोर्ट। अभी तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कोर्ट करेगा, आपके खिलाफ तो कुछ करेगा नहीं कोर्ट। He has a point. How do you say that? This is only at the stage of investigation. 2008 Supreme Court, page number 9, divine Just 2008 SCC criminal, SCC criminal. page number 9, Yes. divine retreat का मैटर है। इसमें होल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ. Just get me the judgment, please. मेरा एक निवेदन था इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन चूंकि हमें मालूम नहीं था कि ये अपीयर हो रहा नहीं, मैं भी रूलिंग लेके आया। नहीं, that's all right. अपन ये it's only a question of their participation. हाँ, पार्टिसिपेशन का ये है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रपोज्ड एक्यूज को राइट ही नहीं है। That is true. No, FIR has been lodged. ट्रायल कोर्ट हो जाएगा। You see, your right only accrues after the trial court takes cognizance. If you go classically by the CRPC, that you अभी तो आप किसी कोर्ट के सामने नहीं हो। नहीं, मेरा कहना ये है, हाँ. आप मेरे अगेंस्ट में रिलीफ मांगने आए हैं। मैं अगर मैं कोर्ट के सामने अपनी बात को अगर रख दूं क्लियर करके, और एक पक्ष को अगर कोई नहीं, we are not to hear you at this juncture. अगर आपको अरेस्ट से डर है तो उसके लिए 430 है। नहीं, अरेस्ट पिटीशनर accused has already been arrest released on bail. Bail. Now, if you think enhancement of these sections, I have also filed a petition for issuing direction to the concerned police authority to conduct fair and impartial investigation is what he is also asking. He is from the side of the complainant. The question is whether you have a look. In the case of Dharampat 2016, We look into those judgments. You say, give us those judgments, we look into it right away. We look into those judgments right away. If those judgments are squarely applicable into your case, we'll allow the application. If it is not, we'll dismiss it. These are the only two things that will happen today. Yes, get me those two judgments. कहाँ बोल रही हूँ? नहीं, इसमें मेरा ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट पे भी है कि इनको इसलिए नहीं उसमें इंटरफियर करने दिया जाएगा कि न तो ऑनरेबल कोर्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, न ट्रायल कोर्ट है। केवल फेयर। That's right. We are only here to give a gentle push. तो फिर ये हो जाएगा कि साहब इंटरफियर हो जाएगा एक तरह से उसमें। We are not to conduct the investigation. The courts are not to conduct the investigation. हम कोई इनके खिलाफ नहीं मांग रहे, हम तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं, केवल नहीं, मगर ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन इतना खराब है, वो
बिल्कुल एक रीजनेबल पर्सन ऐसा कर ही नहीं सकता, जी, जी। देन द कोर्ट कैन सर्टेनली इंटरसीड टू डू जस्टिस जी। इफ द इन्वेस्टिगेशन इज एब्सोल्युटली वन साइडेड. जी, वो तो ऑनरेबल कोर्ट ने Court ड्यूटी has also said in several cases, Look, during it's the course of investigation, complainant or accused. As I have, Mr. Counsel, look, it's like this. Under 482, the arms of the High Court are limitless. Yes. But with such powers, greater circumspection is to be this thing exercised by us. That is all. Whether in the facts and circumstances of a particular case, how wide should we extend our arms? That is all. Yes. That is all. Get me my laptop. एक्चुअली ये देखा जाता है जहाँ मेरिट पे खराब केस है तो एक्यूज सोचता है कि मैं एंट्री फ्री करके किसी तरह से कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करें. अरे, ये रहता है ज्यादातर एक्यूज का. Then आपको कोई नोटिस नहीं हुआ, कोई पार्टी नहीं बनाया. Court is on nobody's side. जी. Understand, neither on the side of the petitioner or the respondent. It will look into this thing objectively into the facts of the case. That's all. केवल इतना था कि आप मेरे अगेंस्ट में रिलीफ मांगने आए तो नहीं, बिल्कुल नहीं मांगने आए, नहीं मांगने आए आपके खिलाफ. एक मिनट वो अलग है. This is not a civil case or under the writ jurisdiction. जी, Where here your rights are protected, you would have the chance of arguing at the stage of discharge, or if you think the cognizance is not taken appropriately, or cognizance of offences which should not have been taken as taken, the judgment of the Supreme Court in Amarnath is there. प्रेयर देख लें, इनके खिलाफ कुछ मांगा ही नहीं हमने. हाँ? प्रेयर ही देख लें. ये बना लो, दूसरा एक और माउस से वो बना दिया ना, इसको ले लो. इनके अगेंस्ट में कुछ प्रेयर नहीं है हमारी. This is 2008, eight. 3 SCC. You can forget divine retreat. Divine retreat was a case where there was no complainant or a victim or an aggrieved party. It was based upon an anonymous complaint. Therefore, the Supreme Court in that case is this thing observed.
Yeah, it's a peculiar case of its own kind where an anonymous petition is sent directly in the name of a judge of the High Court, which was so more to taken up as proceedings under 482 CRPC. The High Court ought not to have entertained such a petition for taking the same on file under section 482 CRPC. That is a different case. Here the complaint, the victim itself is before us. So as far as the factual aspects of divine retreat are concerned, it's totally different. So it will not act as a ratio decidendi as far as this particular case is concerned. 14 को इसको रख दें और मैं और इसमें मैंने आज किस लिए लगा हुआ है? आज केवल मिश्रा रिपोर्ट के लिए मिश्रा रिपोर्ट आ गया क्या? आया है, दिखाइए। 9/2 की आप सब वो देख लें ऑर्डर शीट। बाईस 11/2022 की है सर। FSL 1 19 नंबर। प्लास्टिक के डिब्बे में विसरल मटेरियल पाया गया जिसकी मृतिका नीतू गुर्जर का विसरा का होना लेख है। मैं कागज में पैकेट मामूला स्वयं से परीक्षण प्रतिवेदित परीक्षण चूंकि सर्पढस स्थान की त्वचा संरक्षित कर नहीं भेजी गए, अतः सर्प विष का परीक्षण नहीं किया जा सका। हाँ, अरे बाबा, वो त्वचा का जो हिस्सा है उसमें दिख जाएगा, पॉइजन का ट्रेस मिल जाएगा। हाँ हाँ, एक मिनट। अच्छा, विसरा का परीक्षण प्रतिवेदन जब्त करने से विसरा रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं है। पेज नंबर 17। हाँ, 2 pinpoint mark present on left ankle, joint on discussion ecchymosis under the underlying tissue। प्रेग्नेंट थी, वो भी देख लें साहब साथ में। उसका कहीं पे भी नहीं, प्रेगनेंसी कहीं पे भी नहीं आई है। नहीं, वो 2 pin, just a moment, it says it, the doctor is giving a very confirmed opinion that it is because of a snake bite. He does not say that it should be subject to a serological report. Jesus. That he does not say to corroborate it with circumstantial evidence. ये कहाँ पर हुआ था इंसिडेंट? कहाँ पर हुआ था? ससुराल में। ससुराल घर के अंदर। बॉडी कहाँ पर थी? जी सर, बॉडी कहाँ पर थी? घर के अंदर पड़ी थी। घर के अंदर पड़ी थी जी। और ये आपको अभी अलाउ नहीं किया गया। एक मिनट, just hold on, you don't say anything. The state is competent. The state is competent right now. ये पेज नंबर फोटोग्राफ्स कहाँ हैं? कौन से पिन मार्क्स दिख रहे हैं इसमें?
जो सर्कल पोजीशन में तो कुछ भी नहीं है। ये उसमें कहाँ पर दिख रहा है बाइट मार्क्स? इट बी लाइक पंक्चर वुंड्स दिखाई नहीं दे रहा उसमें, एंकल में। हाँ वही देख रहा हूँ, उसी पे देख रहा हूँ। आई डोंट सी द पिन प्रिक मार्क्स देयर। यहाँ पर दिस डजंट लुक लाइक अ स्नेक बाइट मार्क एट ऑल। Meticulous physical examination. What physical examination has this doctor done? ये जिस हिसाब पर रिपोर्ट दे रखा है, बिल्कुल कहते ना कि सूक्ष्म फाइंडिंग। द डॉक्टर, ये जो रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक्स है, सिंस कॉज ऑफ डेथ इन द प्रेजेंट केस वाज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड एज अ स्नेक बाइट ऑन मेटिकुलस फिजिकल एग्जामिनेशन। मेटिकुलस फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है? 2 pinpoint marks present on left ankle. आप दिखा दो उस लेफ्ट एंकल में वो पिन प्रिक मार्क्स कहां पर है। कॉल फॉर द कलर फोटोग्राफ्स ऑल्सो इन दिस केस, and whether the blood of the victim should have been preserved. स्किन प्रिजर्व, अब ये इस पे सेकंड देखो, ये तो लगता है कि द डॉक्टर इज ट्राइंग टू corroborate the postmortem. कहता है स्किन प्रिजर्वेशन फ्रॉम साइट ऑफ बाइट मार्क विल नेसेसरली नॉट यील्ड। नेसेसरली है ना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट मीन, मगर हो भी तो सकता है। ही डजंट से कंक्लूसिवली दैट इट कैन नॉट यील्ड। सो व्हाई इज ही ट्राइंग टू बेंड ओवर बैकवर्ड्स टू सपोर्ट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट? The cause of death was explicitly clear to snake bite. और जिसका ओपिनियन आपने मांगा है, he is the same person who has done the postmortem report. वो तो अपना रिपोर्ट तो सपोर्ट करेगा। वाइट अगर ये सही कह रहा है, देन वो जो सेरोलॉजिक जो टॉक्सिकोलॉजिस्ट है, वो ये क्यों लिख रहा है कि चूंकि सर्वदस्त स्थान की त्वचा संरक्षित कर नहीं भेजी गई, अतः सर्व विष का परीक्षण नहीं किया जा सका। उसको ज्यादा ज्ञान है टॉक्सिकोलॉजी के बारे में कि डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कर रहा है। जहां तक डॉक्टर जो पोस्टमार्टम कर रहा है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब जानता है, मगर टॉक्सिकोलॉजिस्ट का एरिया अलग है। ही इज एन एक्सपर्ट इन केमिकल एनालिसिस। अब वो कह रहा है कि वी कांट कम टू अ फर्म कंक्लूजन बिकॉज दैट पार्ट ऑफ द स्किन हैज नॉट बीन सेंट। वो भेजा ही नहीं। क्यों नहीं भेजा? अब ये नहीं कह सकते कि वो भेजने से शायद नहीं मिले, वो आपका काम नहीं था। आपको चाहिए था कि उसका एरिया वो हटा के जो है सेंड फॉर टू द टॉक्सिकोलॉजिस्ट। एक और देखें सर, हमारी फाइल में पेज नंबर 12 पे सर, वो उस समय 4 महीने की प्रेगनेंसी भी थी, वो भी पीएम रिपोर्ट में नहीं आई कहीं पे भी। Oh, that's not there in the PM report? PM रिपोर्ट में प्रेगनेंसी नहीं आई, जबकि वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। पूरा डॉक्टर और पुलिस मिली हुई थी मुझे मुझसे। Yeah, this is shocking. If the she was pregnant at that time? 12 लगाया मैंने सर, पेज नंबर। पेज नंबर 27। We'll hand this over to the CBI. 27। पेज नंबर 27 T12। She was pregnant. 15/8 को डेथ कब हुआ है? Date of the incident? 11/10/2022। 11/10/2022. She was pregnant at that time of her death. There was nothing in the postmortem report. There's nothing in the postmortem report. 15/8/2022 का जो रिपोर्ट है, इसका जो अल्ट्रासोनोग्राफी का, gravid 11 weeks and 5 days.
और 2 महीने बाद वो मरी है, सो डिलीवरी तो हुई नहीं है, और इसमें उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है कि यूट्रस में ग्रेविड बच्चा था. कॉल दीज 3 डॉक्टर्स. We'll direct the CBI to carry out an investigation to this. This is beyond the local police. डॉक्टर की ओपिनियन नहीं है, दोनों को बुला देते हैं, क्योंकि हमारा पूरी इन्वेस्टिगेशन उसी पे चल रही है. एक मिनट. वो तो अपना बचाव करेंगे, उनसे ओपिनियन लेंगे आप. No, we'll not mention so and so. Son lying, wearing robe. Let all the 3 doctors who carried out the postmortem, let them appear before this court. We'd like to ask them certain questions. Let them be here. Yes, what do you have to say? We'll consider your application straight away. What do you have to say right now? एक तो divine retreat का देख लिया, it will not apply in your case. Which is the other case? बताइए. 14th के लिए next date I will. It's really. List this case on top of the list on 15/3. So on that date, comma, the 3 doctors who carried out the postmortem report shall be present before this court. जैसे वो आ जाए, we'll take it up as item number 1, क्योंकि we don't want to keep doctors waiting. So we'll hear them and send them.